Assalamu alaikum. A very, very, very warm welcome. How are you, everyone? Thank you so much for all the love and support you guys have been giving us. Absolutely amazing, phenomenal. Welcome, very, very warm welcome to your own The Real Gurus. Of course, जैसा आपको पता है कि we do this show pretty much once in a month exclusively for the audience, for you guys, because you guys have shown us so much of a love about how to go about this show, of course, and it's absolutely phenomenal to see the response from you guys. So very humbly, very, very good evening. Assalamu alaikum. It is 8:07 live from Melbourne. कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 को जब हम मद्देनजर लेते हैं, पेंडेमिक की सूरत हाल है विक्टोरिया में, खासतौर पे एक बिल्कुल लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो उसको कैश इन कर रहे हैं, लोगों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हम जोड़ते जाएं लोगों को और इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा से ज्यादा होती जाए वो दे सकें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को आपके साथ कनेक्ट कर सकें. ऑफ कोर्स, जैसा आपको पता है कि हम दी रियल गुरुज जो ये प्रोग्राम है, इट्स टोटली डिजाइंड आफ्टर अ लॉट ऑफ योर फीडबैक to connect you with the best of the best people in the industry, और जो inspirational लोग हैं, professional entrepreneurs, उनको connect किया जाए community के साथ, and how we can give them a flow of working scenarios. किस तरीके से आप जो सोच रहे हैं, जो चीज प्रैक्टिकल में लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए आपके साथ कनेक्ट करते हैं हम कुछ वेरी इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स. आप अपने अपने कमेंट करते जाए, स्ट्रीम को शेयर करते जाए. थैंक यू सो मच वकार खान. स्ट्रीम को शेयर करते जाए. आज आप लोगों के साथ हम लोगों ने देने हैं बेहतरीन व्हाट इज वेरी नाइस ग्रोसरी और ऑनलाइन स्टोर के वाउचर्स. बहुत जबरदस्त सरप्राइजेस हैं. व्हाट यू रियली नीड टू डू, और एवरीवन इज गोना बी विनर टुडे. एवरीबॉडी who will be live watching us today will be winning something from us. So it's an absolutely extremely amazing show. Get excited, get on, jump on, add people, tag people. Assalamu alaikum Naz. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शो. और मैं एक दफा दोबारा शो का थैंक यू सो मच कर दूं उन सारे नाजरीन का जो हम लोगों को ओवरसीज से, यूएई से खास तौर पे मैसेजेस करते हैं और देखते हैं. बहुत सारे मैसेज आते हैं और हाँ, आप लोगों के फीडबैक्स भी बहुत ज्यादा आते हैं जो मैं देखता हूं पर्सनली, या हमारी टीम पर्सनली देखती है, फीडबैक्स को रिव्यू करती है, चीजों को लेकर आती है. तो जल्दी से जुड़ते जाएं. हमारे साथ एक इंस्पिरेशनल पर्सन आज मौजूद है, उनको चेरी पिक किया गया है कि आज उनको लेकर आते हैं, उनसे दास्तान सुनते हैं और बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट करते हैं. बहुत सारे लोग, वो लोग जो बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑनलाइन शॉप के अंदर टैप इन होना चाहते हैं. एक एक्सपर्ट जो ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं ऑनलाइन स्टोर पे, उनको आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपके सामने होंगे. आपने अपने कमेंट्स में आके सिर्फ क्वेश्चंस पूछने, नथिंग एल्स, नथिंग मोर, एंड यू विल गेट the answers, of course, from an expert. On top of that, there is everyone today will be a winner. I'm so excited to say this, that everyone today will be a winner. They will be winning a voucher from apnidukaan.com.au. check it out, it's very nice. अगर आपने कभी apnidukaan.com.au से शॉपिंग करी है तो उसके फीडबैक भी दे सकते हैं. Inspirational story behind that, a person behind that, a business, a person who's started this, who's going to be soon inshallah making up some business empires. So it's empire time, guys. Just jump on, tag करते जाए अपने दोस्तों को, अपने रहने वालों को, friends को, families को. We are starting now, we've just started, so of course it takes some time for people to come in. हमारे साथ मौजूद है बैक स्टेज पे रजा हसन, जिनको मैं थोड़ी देर में लेकर आऊंगा. रजा हसन का ताल्लुक जो है अपनी दुकान.com से है और एब्सोल्युटली फिनोमिनल कॉन्सेप्ट, प्रोवाइडिंग वेरी नीड और नेसेसिटी की चीज ऑल ओवर दी ऑस्ट्रेलिया. 5000 प्लस सबब्स की बात कर रहा हूं मैं, और इसके बारे में पूरी स्टोरी हम सुनेंगे. आप लोगों का वेट कर रहे हैं, कनेक्ट होते चले जाएं और जल्दी जल्दी जितने लोगों को आप टैग कर सकते टैग करते जाएं. आपको ऑफ कोर्स मैं इसकी पूरी दास्तान पूरी दिखाऊंगा पीछे से. ये एक क्विक वीडियो आपके सामने.
Gee, thank you so much for watching this. This is what we call the real gurus. Of course, सबसे पहले thank you so much for today's handpicked, all the supported by and sponsored people. Of course, this show is categorically designed for the community, for all of us, me, you, and everybody. अगर आप लोग इस शो को आफ्टर आवर्स देखेंगे, जो शो खत्म हो जाएगा उसके बाद देख रहे होंगे, तो जुड़े रहें, इस शो को देखते रहें, क्योंकि इस शो के अंदर वी गोना बी टॉकिंग अबाउट वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी. एंड इट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया. जब भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज पेनिट्रेट होते हैं लोगों के लिए, लोगों के साथ, के वो लोग भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं. एंड एक्चुअली इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करें तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे. चाहे आपको टैक्सेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे आपको फाइनेंस की इंडस्ट्री का प्रॉब्लम हो, चाहे आपको किसी ऐसे बंदे से बात करनी है जिसने ऑलरेडी एक चीज थीम रन अप एंड रनिंग करके चल रहा हो, उनके साथ हम आपको कनेक्ट करते हैं. तो आई थिंक विदाउट अ फर्दर ड्यू हमें बहुत सारी बातें करनी है इन हिसाब से, और इनके ऑफ कोर्स समझना है इनके बिजनेस मॉडल कैसा है, और ये सारी हेल्प करेगी. अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, या अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हैं, तो दिस इज द शो फॉर यू. दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न एज मच एज यू कैन, बिकॉज वी विल बी हैविंग द इंडस्ट्री एक्सपर्ट, द एक्चुअल रियल गुरु आपके साथ कनेक्टेड होंगे यहाँ पे, और फिर आप उनसे सारे सवाल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी वॉचिंग. व्हाट आई विल डू इज विदाउट अ फर्दर ड्यू, और आपके क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, प्लस अपनी दुकान.com.au के वाउचर्स भी दे रहे हैं. जिसको भी वाउचर्स चाहिए एक्सक्लूसिवली कमेंट्स में जाके सिर्फ हाई फाइव या just write it down that you're looking for the voucher, or you would like to, or you are interested. I will definitely make sure that my team will give you this vouchers today. So today it's a cash money. It's not a cash money. You can go and do the grocery, but it's a cash voucher. The value and everything will be revealed very soon. So here, after in your clapping or in your round of applause, I will bring Raza on the screen. अस्सलाम वालेकुम Raza, how are you? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, thank you so much for such a kind introduction. Thank you so much. You're doing very well. Yeah, I'm good. Thank you, alhamdulillah. Thank you so much, Raza. You're doing absolutely phenomenal job. I was very excited to interview you because apni dukaan, when I looked at it, there's so many grocery stores and stuff, but the concept was so different. Plus, you're actually not only the concept, but you are helping out so many people in regional and remote areas where basic necessities is a bit hard, or actually getting everything, ordering everything on your couch and getting it on your door delivered. It's pretty tough these days. And that's are the running the motivation. show. That's the motivation behind it. We felt the pain, obviously, where we are in regional towns. There is no halal butcher, there is no Pakistani groceries, there is no international groceries. So we feel the pain, and when someone feels the pain, there is an opportunity there, right? Of course. We found the opportunity, we found the pain, and we thought, okay, let's fix this. So alhamdulillah, when your intention is good, your motivation is good, then things fall in place. So that's the idea behind it, to help Muslims out there, or people in general who want halal meat delivered to their doorstep. International groceries, Pakistani people, Indian people, Bangladeshi people, delivered to all the regional and remote areas. We deliver to places that are 20 hours away from major towns. 18 hours away from major town. People used to drive for 6 hours. We're gonna talk about all that today, and we've got some time from you, so thank you so much. Of course, हमारी वो सारे कम्युनिटी मेंबर्स जो अभी जुड़े हैं, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो को देखने का, पसंद करने का. We are live with you with Raza Hassaan Sahab, and Raza Hassaan Sahab is the entrepreneur and the inspiring personality behind अपनी दुकान brand, और उसके बारे में हम बात करेंगे. आज हम वाउचर्स भी दे रहे हैं, अपनी दुकान के वाउचर्स दे रहे हैं, everyone, for everybody. Just you need to say hi or interested. My team will contact you and give you those vouchers absolutely for no charge. Of course, you just need to go and do the grocery, put that promo code, and you get that grocery. And you have to tell us your experience. So Raza हमारे साथ है. Raza की हिस्ट्री, बैकग्राउंड पहले बात करेंगे. Raza से मैंने बहुत सारी चीजें पूछनी भी है. आप लोग भी अगर कुछ अपना ऑनलाइन बिजनेस खोलने वाले हैं, कुछ सोच रहे हैं उस तरफ, आपको हेल्प की नीड है, आपको थोड़ी सी इंस्पायरेशन की नीड है, मोटिवेशन की नीड है, तो मोटिवेशनल बहुत है रजा भाई, और रजा से हम जो है ना वो सारी स्टोरी सुनेंगे. और अगर आपने कोई सवाल करना है रजा से, कमेंट में जाए, क्वेश्चन लिखें, we'll make sure Raza will answer you. शेयर जरूर कर दीजिएगा, because शेयर से ये होता है, not about the only benefit we will get from share is as soon as you share this stream to somebody else,
somebody else might be thinking about on the back end कि यार मैं ऐसा कुछ बिजनेस करूं या ऐसा कोई मॉडल लेकर आऊं और वो ये स्ट्रीम सुनने की वजह से he'll be able to take that life changing step. So please do share with your loved ones या टैग कर दें अपने loved ones को. और ऑफ कोर्स आपको ग्रोसरी का वाउचर तो आज मिलना ही मिलना है. मैं रजा की तरफ चलता हूं क्विकली. थैंक यू सो मच रजा फॉर ऑफ कोर्स गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम. रजा मुझे आपसे पूछना है सबसे पहला क्वेश्चन. रजा, how did you found this island called Australia? आपकी स्टोरी बताएं. आपकी स्टोरी आपके अल्फाज से कैसे यहाँ पर आए और कैसा चल रहा है. ये मैं आप स्क्रीन पे हैं हमारे. पहले तो मैं ये बोलूंगा कि बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. I came here 2006 as a student like most of us come. तो पढ़ने के लिए आए यहाँ पर. पढ़ाई की, फिर आपको पता है कैसे स्ट्रगल होती है परमानेंट रेजिडेंसी और ये वो. फिर शादी हुई. ऑब्वियसली वाइफ इधर आई, मेरी वाइफ हीरा जिसने मेरे साथ स्टार्ट किया है. She's a doctor. She's co-founder and she's a doctor. Alhamdulillah, she's the reason why we moved to a regional town. Of course, yes. We were in Melbourne for 12 years, and Alhamdulillah, we were doing quite well. But then she got a job in a regional town called Mackay, which is 10 hours north of Brisbane. Right, so there's only 100,000 people here. Probably more than what we had in Geelong next door to us in Melbourne. Right. Yes. So we came here two and a half years ago, and we realized there's no halal butcher here. There is no international groceries, so it made it tough. We used to order some Pakistani groceries online, but that used to take 2 weeks and stuff like that. And you can't order frozen items, you can't order refrigerated items and stuff like that. And even online, there was very limited Pakistani grocery available, right? So our mosque here, alhamdulillah, our mosque did a fantastic job. They used to bring halal meat in pallets every 2 months or every month and a half or something like that. We used to go to the mosque, buy it from the freezer and stuff like that, and do it that way. But sadly, because of the COVID-19, the mosque had to close doors, and we had a meeting. They told us that, look, we're not going to be able to carry meat in the mosque because we will have to close doors. We're not, we can't open the mosque. So we thought, okay, what do we do now? There's a community of, I think 60, 70 families here in Mackay, of Muslim families. They were like, okay, what do we do now? So I stood up, me and my wife, we decided, okay, how about we bring the meat from Brisbane to Mackay and deliver it to their home. So we started this just for the community of Mackay. We started, and then we bought it in our garage. So the first delivery of meat came to our garage. I put it in my car. I delivered to people's houses. You know what I mean? All the friends and families that live here in Mackay, we delivered it in my car. We delivered it to them. Right. Once we did that, all of a sudden, a lot of more people coming to us saying, hey, we don't have halal butcher as well. Can you please deliver it to us? Like Townsville approached us. They wanted deliveries. Rockhampton approached us. Cairns approached us. Gladstone approached. So all these regional towns who are, in central and north Queensland, when they found out that there is someone who is bringing meat from Brisbane and delivering it to your doorstep, they started coming in. And when they started coming in, we had to, automate the whole process. We used refrigerated courier companies rather than using my car, to deliver it to all these places. Then we added groceries. Then we realized that we can't do it once a month. We started with once a month. When you do things once a month, the volume, when there's volume, you can't manage it. So we had to divide it, not because we wanted to do weekly. We had to divide our volume to fortnightly, then to weekly. Then we started doing weekly. It was like, okay, we'll do it once a week just to manage the volume that we were getting, because there was so much demand, so much pain in regional areas. You wouldn't believe these areas are not from yesterday. Muslims have been living in these regional areas for a long, long time. I'm talking 60 years, 70 years, right? But all this time, there's no halal butcher. They used to bring it from Brisbane, sometimes Sydney. Meat might be frozen, might be old. The quality wasn't good. You know what I mean? Things like that. Yes. So they were compromising on all that because they didn't have it available next door to them. You know what I mean? People who are living in Metro, they're blessed. They're lucky. Every street has a halal butcher.
every street has an international grocery store, right? But imagine yourself living in a regional town, 4 hours away or 5 hours away from a metro city, or a halal butcher altogether, Forget about halal meat. If you don't have a butcher and you live 4 hours, 5 hours away from a place where there is a butcher, then what do? You drive on the weekend, 5 hours to go, 5 hours to come back just to buy meat, which is a big pain. So we thought, okay, if we are going to help people, if we are going to help Muslims or people to get halal meat, then this is not it. You're not done until rest of the country or rest of the world then made the whole halal business meat. out of it. You know what I mean? So we said, okay, we're not going to just do it for Mackay. If we're going to help, we're going to help all of Australia, right? So anywhere there is regional Muslim, even one family, if there is one family living in a regional area, we need to be able to deliver halal meat. They shouldn't struggle to follow their faith. You know what I mean? Yes. It's about faith, right? They have to have choices. They don't have to sacrifice. Okay, good. So देखिए, अच्छा, so that's very good. हमारे पास बहुत बड़ी community है. Of course, हमारी अपनी community के लिए कर रहे हैं. Urdu speaking है, different ज़बानों से, तो हम लोग we will try to mix up things. Okay, we've got a lot of questions coming, but I actually asked Raza, how did you end up? So you ended up as a student as well, which is good. A lot of sacrifices. They actually wash you like in a washing machine, Australia, before they give you a residency. So it's pretty good, pretty awesome. We've got a lot of comments. सबसे पहले तो मैं सबका रजा की तरफ से भी, अपनी दुकान की तरफ से भी, और क्योंकि हमारी अपनी दुकान है, और हमारी तरफ से भी, PWO की तरफ से भी, दी रियल गुरु की टीम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. For every single person who's watching and sharing, a lot of shares has been done. So people are jumping on. I'm really excited. Guys, thank you so much for jumping on. To be honest, you're doing absolutely phenomenal job. A lot of people are watching us. जिनको जो लोग अभी कनेक्ट हुए, मैं दोबारा रिफ्रेश कर दूं. सॉरी रजा, हमको ये करना पड़ता है क्योंकि लोग हमारे लिए आते हैं, हम लोगों के लिए आते हैं, और लोग हमारे लिए आते हैं, तो लेट होते हैं. हम कभी लेट हो जाते हैं तो हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं. We've got Raza Hassan from apnidukaan.com, a shiny handsome person, and we've got Mini Raza as well, Mini Raza from apnidukaan.com as well, and then I'm your host Hassaan Shah from the Real Gurus PW Digital. सब लोग लाइव हैं. आज हम दे रहे हैं apnidukaan.com के $10 ऑफ के $10 के वाउचर्स एक्चुअली दे रहे हैं. इसके TNCs जो है हम बाद में पढ़ेंगे एंड में, लेकिन अगर आप लोगों को TNC, अगर आपको वाउचर चाहिए, आयशा अशर को हम वाउचर देते हैं. मेरी टीम देख रही है इस टाइम पे, डायरेक्शन टीम पीछे बैकएंड से, तो वो आपको मैसेज कर देगी. व्हाट यू जस्ट हैव टू राइट डाउन is write down apnidukaan.com. That's it. That's all you have to write down in the comment, and you will get that voucher absolutely free. And you can go and use that voucher and shop. And once you shop, then tell us your experience. How was your experience? Now, we are not, I mean, हम यहाँ पर जुड़े दी रियल गुरुज का मकसद ये होता है कि इंस्पायरिंग स्टोरीज और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को आपके साथ आगे कनेक्ट करें जिनसे हम कुछ सीखें एवरीडे लाइफ में, और उसके एक आइडिया को भी डिप्लॉय करेंगे इस तरीके से, और अपने आइडियाज को डिप्लॉय करें साथ में, तो हम आगे से मल्टीप्लाई हो जाए, कम्युनिटी वाइडर कम्युनिटी स्ट्रांग हो, वाइडर कम्युनिटी ग्रो करे. और उसी के लिए हम रजा हसन को आज लेकर आए. उन्होंने सैटरडे वाले दिन अपना 1 घंटा निकाला. मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं और आपके क्वेश्चन पूछने वाला हूं. आप लोग अपने क्वेश्चन लिखते जाइए कमेंट्स के अंदर. अपनी दुकान के बारे की एक क्विक छोटी सी वीडियो देखें, क्वेश्चन जरूर लिखते जाइएगा. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस अपनी दुकान के वाउचर का जो आप देखने वाले हैं अपनी स्क्रीन पे, तो जस्ट apnidukaan.com.au लिखते हैं अपने कमेंट्स के सेक्शन में. वी विल मेक श्योर दैट यू विल गेट दैट वाउचर टुडे इटसेल्फ. आज हम गूगल मिनीज इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वाउचर बहुत अमेजिंग है. गूगल मिनीज की डिले बहुत हो रहे हैं शिपिंग के अंदर. यहाँ तो ये आपके घर के अंदर, घर पे जो है 3 दिन के अंदर ग्रोसरीज भेज रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स ज्यादा कीमती. लुक एट दिस. We'll see. It's a very inspiring. Okay, so let's start giving up some vouchers. So आयशा अशर को मेरी टीम पीछे से मैसेज कर चुकी है और वाउचर दे चुके हैं. $10 जा चुके हैं. सर अब जो पीछे कैलकुलेटर लिखते जाए आपके रजा भाई, $10 जा रहे हैं आपके. सही है. मैं बस काउंट कर रहा हूं, ज्यादा देर मत चलाना शो. नाज मेमन, आपको भी $10 का वाउचर मेरी टीम आपको मैसेज कर देगी.
इमरान खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत अरसे के बाद आपको देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा आपने शो देखने के लिए। अली नवीद साहब, इनकी क्या बात है माशाल्लाह, ये इनका जो है हमारे पास सपोर्ट बहुत रहती है। दी मैकेनिक्स ऑटो रिपेयर्स ऑटो केयर से ये ताल्लुक है इनका। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पैकिंग टू अच्छा, वो बेसिकली पूछ रहे हैं आप फ्रेश कैसे रखते हैं मीट को जब आप डिलीवर करवाते हैं किसी को। अच्छा, हम अभी निटी ग्रिटीज में जाएंगे, लेकिन चले ये क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि थोड़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट रहे लोगों की, लोग समझ लें कि फ्रेश कैसे आएगा, क्योंकि आपकी अपनी दुकान के ऊपर हलाल मीट भी है प्लस सारी ग्रोसरीज भी हैं। तो जी। वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आप फ्रेश भिजवाते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है और तो हाउ डू पहले यू वर्क तो आउट? जी पहले तो हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेटेड कोरियर, ठीक है। जी, तो ओके जो रेफ्रिजरेटेड कोरियर है वो हमारे ऑब्वियसली शॉप से रेफ्रिजरेटेड, मतलब वो बॉक्स उठाता है, अपनी रेफ्रिजरेटेड वैन में रखता है, वो जी, रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस में जाते हैं, फिर उसके बाद वहां से रेफ्रिजरेटेड वैन लोगों के घर पे डिलीवर करती है। टू बी ठीक, एबल टू कीप द मीट फ्रेश आफ्टर इट्स बीन डिलीवर्ड, हमने क्या किया, हमने पूरी, जो आपने सिल्वर बड़े अच्छे से बॉक्सेस देखे होंगे पिक्चर्स जी में, मैंने देखे थे कई वो पिक्चर में। जी जी वो इंसुलेटेड पैकेजिंग है एक्चुअली। तो वो जी जी जी, इंसुलेटेड है, प्लस हम उसके अंदर मीट के साथ रखते हैं आइस पैक्स। तो ओके उससे क्या होता है कि वो, बिकॉज इट्स इंसुलेटेड एंड बिकॉज द आइस इज इन देयर, इट कीप्स द मीट फ्रेश फॉर 6 to 8 hours at ओके your doorstep once it's been delivered. So, ओके after, let's say you're not at home, you finish work at 4 o'clock in the afternoon and the meat was delivered at 1 o'clock in the afternoon, right? जी So by the जी time you get home might be 5 o'clock, 6 o'clock, so the meat जी, stays fresh in insulated packaging with ice packs ओके, in it, so nothing और happens to आइस the meat पैक्स भी होते हैं उसमें, until you come ओके, back. Yes, ice pack दैट्स is प्रीटी there गुड, as well, yeah, to keep it दैट्स fresh. प्रीटी गुड, प्रीटी And it comes fresh फिनोमिनल, as well. We don't freeze it throughout the journey as well. ओके So the minute that it gets cut, it gets dispatched and it gets delivered to you fresh, not frozen, right? So a lot of people ओके think it's easier to freeze it. We don't freeze it. ओके, सो यू डोंट फ्रीज इट, दैट्स प्रीटी गुड। No. अच्छा, ये एक और क्वेश्चन भी हमें यही आया है कि फ्रेश पैकेजिंग, व्हाट टाइप ऑफ पैकेजिंग यूजिंग। तो पैकेजिंग बता दी उन्होंने जी, इस्माइल अली साहब, उन्होंने पैकेजिंग बता दी, उन्होंने बकायदा वो एक आइस पैक्स भी दे रहे हैं। अच्छा, आइस पैक्स भी फिर आपको कॉस्ट करते होंगे ऑफ Of कोर्स। course, there's a lot of तो cost involved in it, but because we keep our mission in mind, our mission is to actually get halal food to regional and remote areas. That's the only दैट्स mission प्रीटी the गुड, company has. So we don't worry about pricing as such. We are not the cheapest out in the market because our mission is to get to remote and regional areas. So things will generally be obviously a little bit more expensive, ऑफ right? कोर्स। अच्छा, मैं इस Because पे कोई yeah, कमेंट करना चाहता हूँ रजा, प्लीज, सॉरी डिस्टर्ब यू। सबसे जी पहले तो आसिफ वहाब साहब, थैंक यू सो मच। मेरी टीम ने आसिफ वहाब साहब को भी दे दिया, नाज मेमन साहब को भी नाज मेमन साहिबा को भी दे दिया, वो हमारे हर दिल अजीज हैं। अली नवेद साहब को भी जा चुका है $10 का वाउचर, दैट्स प्रीटी गुड। बस काउंट करते हैं साइड में। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कम्युनिटी को बोलना चाहता हूँ, जितने लोग आज देख रहे हैं या इसके बाद भी देखते जाएंगे, देखिए अपनी दुकान.com पे मैं, मेरी वाइफ को मैंने कल ही बोला था, और शी वेंट ना, एक्चुअली टुडे, this morning she was looking around something, actually it's pretty phenomenal to see. She was looking for something, it's like a chandi ka work, when you make meetha, and she was looking at it, and all of a sudden we got a message from the website, are you looking for something, you're confused. It is exact same experience when you walk out into the shop and you're looking something in an aisle and somebody approaches you and say, hey, are you looking for something, can I help you? It's exactly same phenomenal experience. So that's pretty good. Now, second thing, which I loved it, is prices are pretty much exactly the same or a little bit dearer. I mean, I would say $1. But think about this, in $1, I am not even moving myself from my couch, going in this pandemic, putting the mask on, all the hassles of, using the sanitizer and everything, nothing at all. I am just clicking tap, 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 and I get the order. So भाई और बहनों और दोस्तों, अगर एक कोई चीज $1 ज्यादा की है, इट इज टोटली ओके। एंड ऑफ द डे आपकी 15 या 20 आप प्रोडक्ट्स ऐड करोगे, कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट मिलेगा। End of the day it's same, but think about this, the whole end-to-end solution you're getting in the noise packed thing, that is phenomenal. Secondly, आप ऑफिस की ब्रेक में हैं, यू कैन गो एंड ऑर्डर फ्रॉम देयर, यू डोंट हैव टू वॉक इनटू द शॉप। लास्टली जो मेरा फीडबैक है इज, मैं मेरी मजहर भाई की दुकान पे जाता हूं, मैं यहाँ पे मेरे फॉकनर के तो मजहर भाई हैं, उनके पास जाता हूँ यूजुअली। 90% शॉप्स की चीजों पे स्टिकर लगा होता है। आई फील ऑफ
the reason I want to ask the price is because I know what the price is, for example. But the reason I want to ask the price, I just want to make sure is it the right price, because कभी डॉलर ऊपर है, कभी नीचे, कभी कुछ है, कभी कुछ है. And 80% to 90% products के ऊपर stickers होते हैं, but sometimes नहीं भी होते हैं. Here you know exactly what you're spending, because in that shop you actually buy all the item, you ended up at the shop, and then you get to know what your bill is. So students के लिए तो मैं खास तौर पे बोलूंगा, अपनी busy life में परेशान होने की जरूरत नहीं. अपनी दुकान.com पे head on करो, grocery enter करो, boom, on your doorstep you got the grocery. So this मैं is my उससे अच्छी बात ऐड करता हूँ हसन भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की. When you buy something from apnidukaan.com.au, you're not just buying for yourself, you're actually supporting our regional Muslims that are living in regional and remote areas that don't have access to it. You know what I mean? So you're actually contributing to that bigger cause, because we have a cause. We're not just a normal business, it's a community service. We want to reach out to all the remote areas, all the regional areas that we are not going to right now, let's say. You know what I mean? There's a lot of places that we are not going to. So you are actually contributing to that cause. You're allowing us to actually reach out to those other areas that we haven't reached out yet. Alhamdulillah, we are doing 5,500 suburbs, but we want to be able to do 10,000 suburbs. How do you manage the whole logistics of 5,500 suburbs? Actually, by the way, okay, here's the deal. If somebody tells me in next 5 minutes, it's 8:33 right now. If somebody tells me in next 5 minutes, how many suburbs are there in Australia in total, I will add on $10 from my side, so that $20 voucher will be given to you. It is a challenge to all the 30 to 40 people watching right now. You need to tell me in next 4 minutes, don't Google it, and tell me how many suburbs are there in Australia. If you tell me, I will give you $20 voucher right now from apnidukaan.com. Come on, write it down. तो अच्छा, आप 5.5, जब तक ये लोग देख रहे हैं, 5,500 सबब्स को कैसे मेंटेन करते हैं, लॉजिस्टिक्स कैसे मेंटेन करते हैं. और जब आपने ये आइडिया सोचा कि यार इतने सारे लोगों को हेल्प कर दिया, अब मैं जरा बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स सोच के और लोगों को हेल्प करूं, तो 5,500 इज आइडिया सिंपल था. और मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपकी नीयत साफ हो ना, इंटेंशन अच्छी हो, तो रास्ता ऊपर वाला बना देता है. ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमको इश्यूज आते थे. पहले हमने सोचा कि यार यहाँ मकाई में तो चलो हम डिलीवर कर रहे हैं खुद से, टाउन्सविल कैसे डिलीवर करें. तो हमने गूगल किया, यार कोई कोरियर कंपनी तो जाती होगी टाउन्सविल. ठीक है, we found a courier company that goes to Townsville. We started doing Townsville. Then Rockhampton approached us, and then said, okay, we Google again, who goes to Rockhampton. We asked the same company if they go to Rockhampton, and they said no. So we found another company. So we were using two separate companies for Townsville and Rockhampton. Then when Cairns come along, we found a company that can do the whole central and north Queensland. We started using them, for central and north Queensland. Then we were like, okay, now we need to do the rest of the Queensland. Who do we use? We Googled again. You know what I mean? Google, alhamdulillah, finds you everything, right? So we kept finding these companies that could help us get to where we want to be, right? So alhamdulillah, we are at the moment, we have we're sharing space in Brisbane, Melbourne and Sydney. We're dispatching from 3 locations. So all the Queensland is covered from Brisbane, all the New South Wales is covered from Sydney, all the Victoria is covered from Melbourne. Inshallah, very soon we are going in South Australia, and that will be covered from Adelaide. You know what I mean? So what we're using is, in each state we're using separate refrigerated courier companies to do all these deliveries. Yeah, and the reason why we're doing that, we can use one company to do multiple states, but they're not. Our mission is to obviously reach out to the most remote and regional areas, and you can only do that by using certain refrigerated companies in certain states, because they have the biggest reach in all the regional and remote areas. So alhamdulillah, we weighed it. We said, okay, this is the company that we should use in Victoria, this is the company we should use in New South Wales, this is the company we should use in Queensland. So we've got 3 different refrigerated courier companies that we use, and they deliver it to the homes. क्वेश्चन आ गया है साइमा अली साहिबा का. थैंक यू सो मच साइमा अली साहिबा देखने के लिए. कोमल बाजवा, जाहिद बिलाल, इमरान खान, सबने मुसलमानों ने जो है ना हमारे लगाना शुरू कर दिए तुक्के. कोमल बाजवा बोल रहे हैं 5,000 सबब्स. अच्छा 2 मिनट रह गए हैं. जाहिद बिलाल बोल रहे हैं 9,000. इमरान खान बोलते हैं 10,000. चले, मेरी टीम आंसर ढूंढ रही होगी. आई होप मेरी डायरेक्शन टीम पिछले आंसर राइट आंसर निकाल रही होगी. साइमा अली पूछ रही है कि मिनिमम डिलीवरी कितने की होती है? $0.
$0. Oh, that's pretty fantastic. Or So delivery fee there is no waive कितना minimum. लो? The reason why we didn't do that, the reason, and I'll explain why we had $0 minimum delivery, is because genuinely some people are living alone, or a couple or That's something true. like that, and That's true. they don't have space to carry a lot of meat, so बिल्कुल. it's unfair on them not to be able to buy. You know what I mean? So we've That's true. kept it 0, and we said बिल्कुल. even if they want to buy 1 kilo meat for the rest of the week, they can जी. do that. It's not, and that's why we didn't put any minimum. Otherwise, we could have, to make it more profitable, Easily. we could have हाँ. said, हाँ. बिल्कुल सही कह रहे हो. $100 minimum, but that's unfair to people who are living alone, or who have a smaller family, or who don't have a fridge. Some people don't have a fridge freezer. They get the meat and they cook it Of straight away. course. बिल्कुल सही You कह know रहे what I हो. mean? So we बिल्कुल. didn't want to do that. That's why there is no minimum order. Nah, that's pretty good, fantastic. I can't believe how much response amazing we are getting right now. So the question we have asked is how many suburbs there are in Australia total. Danish, thank you so much for watching the show. You're doing also a fantastic job in the community. Danish आपको सराह रहे हैं आपके कामों को, of course. अपनी दुकान.com, and then we've got Imran Ali was asking me again. अच्छा इमरान भाई, आपको वाउचर मिल रहा है, आपने, क्योंकि आप भी काफी फिनोमिनल रहे हैं कम्युनिटी के अंदर और रहते हैं, आपने वाउचर यूज करना है. इमरान भाई, आपने वाउचर यूज करना है. जाने से पहले आपको वाउचर टीम भेज देगी. वाउचर यूज करके जरूर रिव्यू देना है, फीडबैक देना है. हमें बताएं तो कि हम इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन उसका फीडबैक तो देंगे किस तरीके से चल रही है, क्या ये इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको पसंद आ रही हैं. और जो भी लोग इस टाइम पे सवाल करना चाह रहे हैं, Raza Hassan say more than welcome. They can ask questions about online store and stuff like that. Now we'll go towards some online business, about some online business. So Abdul Hanan Qureshi, अच्छा मेरी टीम मुझे पीछे से बोल रही है, thank you so much for watching Abdul Hanan. You got a $10 voucher as well. भाई आपको तो मैं एक CSV की लिस्ट भेज दूंगा एंड में रजा भाई, क्योंकि ये जिस तरीके से चल रहा है वो अब it's going out of control. अच्छा रजा भाई, when you think about taking it to the next level, सबसे बड़ी होती है कि इसको ऐसी कोई बिजनेस मॉडल बनाना जो एक्सपेंडेबल हो, जो फॉरन एक्सपेंड हो जाए और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हो. ऐसा नहीं हो कि एक्सपेंशन के चक्कर में एग्जॉस्ट हो जाए और एग्जॉस्ट होके जो है वो आपका रेवेन्यू डाउन हो जाए. तो रेवेन्यू, सारी चीजें ठीक है, सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस को लॉन्ग टर्म पे देखने के लिए. ऐसे ही है. तो ऐसे ही है. जब आपने सोचा कि अब मैंने इसको ऑनलाइन लेके जाना है, लाइव लेके जाना है, आपने शॉपिफाई का इंतखाब किया, शॉपिफाई जैसे पोर्टल का इंतखाब किया. उसकी बैक एंड और फ्रंट एंड की वर्किंग में कितना टाइम लगा आपको टोटल एंड टू एंड रिलीज करने में उसको? यार मैं आपको बताऊं, बहुत ही सिंपल था. लोग डरते हैं शायद ये सोच के ना, लोग रिसर्च ज्यादा नहीं करते. लोगों के पास आइडिया होता है, बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, मगर वो डर के बैठ जाते हैं कि यार नहीं, बड़ा मुश्किल है, कौन करेगा. ठीक है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने शॉपिफाई ओवर थिंक कर लेते हैं. मुझे शॉपिफाई के बारे में कुछ नहीं पता था, या किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता था, जैसे वो कॉमर्स है या अदर प्लेटफॉर्म्स हैं. तो मैंने रिसर्च किया. आप यकीन नहीं करेंगे, ये जब मीटिंग हुई ना कि आपने मतलब मीट का कुछ करना है, तो एंड दीज आर माय वर्ड्स. तो हमारे एक हैं यहाँ पर मुस्तफा भाई, जो पहले ब्रिस्बेन से या सिडनी से मीट मंगाते थे. मैंने उनको ये बोला, इट वाज, आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज अ फ्राइडे आफ्टरनून, एंड आई सेड जस्ट गिव मी 24 hours and I will make up something online, a platform online, and put 40 meat products that you normally buy from Sydney. We will get the orders. Once we get the orders, we will buy the meat and deliver it to them, right? So I asked him for 24 hours, and honestly, within 24 hours, I had an online store ready to go for someone to actually go and make a purchase for meat. अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन शुरू में पूछा था, मैं दोबारा पूछता हूँ. रजा हसन साहब अपनी दुकान से पहले क्या करते थे बाय प्रोफेशन? मैं बिजनेस मैनेजर हूं, और मैं अभी भी हूं. सीनियर बिजनेस मैनेजर हूं फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी. And I've been doing that for 7 years, alhamdulillah, very successfully. I was doing that in Melbourne. Then obviously my wife got a job here in Mackay. So I told my boss I want to go, and he goes, "Nah, you're not going anywhere. We'll find. It doesn't matter where you go in Australia. We'll find work for you. We can't afford to lose you." You know what I mean? So they found work for me, and they said, "Okay, you're going to be looking after the whole central North Queensland and Northern Territory." So alhamdulillah, I look after that. I want to obviously be able to do more for apnidukaan.com.au, but because of the circumstances, they're not letting me go right now.
But Of course, inshallah, we'll that's pretty see good. how we go. No, but you can manage. Look, this is the best part, and that's what we're going to talk about today. Look, all of you guys are watching right now. If you've got some inspirational idea, something where you think, look, it's all. I was reading this book, Think Life. It's from Aaron Sensoni, and he said, wherever you see the market gap or the pain, the moment you feel a pain, that is the opportunity to make the money, because that's where the money is. And मैं और अब्बास एक बंदे को पढ़ रहे हैं. I'm trying to copy a lot of his strategy, and he says, who's got my money? So who's got my money? You have to think about who's got your money. अच्छा, on that I want to really ask Raza here. Raza, मैं ये क्वेश्चन किसी रीजन की वजह से पूछ रहा हूँ. नॉट दैट आई वांट टू नो, बट आई वांट टू टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स टू दिस ऑडियंस. में हम लोगों का यही काम होता है कि हम सब साथ में ग्रो हो. कैसे सब साथ में? अभी अब्बास ने मिलके पीडब्ल्यूए टीम के साथ एक मेंटोरिंग का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया. बाय द वे, अगर आप वॉच कर रहे हैं ये शो तो जरूर देखिए वो शो. दैट्स प्रीटी गुड. वेरी it helps you to lead your success career planning और path planning जब स्टूडेंट्स होते हैं ना कच्ची उम्रों में, तो उसके लिए स्टार्ट किया था भाई. अच्छा, यहाँ पे मैं बड़ी जबरदस्त और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ. रजा से सवाल करता हूँ और फिर मैं उसको डायरेक्शन में लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कितना आसान नहीं है. रजा, आपने बोला आप बिजनेस मैनेजर थे. क्या आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर थे? क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे? बिजनेस मैनेजर थे. थोड़ा सा कंपनी के बारे में नहीं जानना आपके, लेकिन थोड़ा सा बताया आपकी डे टू डे की क्या लाइफ होती थी, जस्ट 30 seconds में. So it's obviously always on the road, talking to customers, talking to, meetings and stuff like that, traveling to Townsville, traveling to Cairns, traveling to Rockhampton. So most of the time away from the family because of the COVID-19. We were here in Mackay. We were working from home. Plus, we had to take, 2 weeks off from work, which is a lot of people had to stand down. So we stood down for 2 weeks, and that 2 weeks is when I opened up an online store, and we automated. So from day one, my concept is that I have to make sure that every single thing that my company does needs to be automated. If it's automated, then I can do whatever I want. So every single thing, from the minute you go to my website, that message that you got, it is automated message. Once you message me, then I get it on my phone, but it's an actual automatic message, right? So you place an order, the order drops, goes to the supplier, the labels get generated automatically, the manifest for the courier company gets created automatically, the courier company gets notified that the boxes are ready automatically, you received an automatic email that has been dispatched, that's automatic. The courier company delivers the things to you, then you get a thank you email. So the point I want to make here to everyone that this guy is not an IT guru. This guy is not a software engineer. He's not an e-commerce builder. By the way, हमारे one of the supporters Mr. Digital Empire Group भी हैं और मैं उसके अंदर काफी ज्यादा शामिल रहता हूँ. I know the digital strategies, digital transformation, the plugins you can install in Shopify, the plugins you can use for your day-to-day life to connect the world to automate. It's very easy. What you really need to do is think of the painful idea, do what Raza has done. It's phenomenal. And I'll tell you, it's only 2-hour video that I watched about the tutorial how to make a website on Shopify. 2 hours, and that was it. Done. Yeah, that's it. So that 2-hour video, and I'm happy to share those links to you as well. All you have to do is Google how to build a Shopify e-commerce store. I saw a 2-hour video and I made it. And then every time I had an issue, I had a bottleneck, I just Googled it. YouTube had all the answers. A mistake happened, coding went wrong or whatever, just Googled it, how to fix this, fixed it. You know what I mean? Or how Shopify, to find a solution. And Shopify is very best in terms of generating coupon codes, integrating with the social media stuff. It's all about social media these days. So, and the best part about Shopify is you start with $29. You don't have to pay thousands of dollars to build a website though. Yeah. So agar aap log dekh I didn't put any capital, zero capital in my business. साइमा अली साहब बोल रही मेरा वाउचर का है, प्लीज मेरी टीम कोई पीछे से वाउचर दे दे. और सवाल किसी ने जवाब नहीं दिया, जिन लोगों ने जवाब दिया उनके भी देख लेते हैं. मुझे लगता है 5,500 ही टोटल सबब है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. बट मेरी टीम ढूंढ रही है पीछे से आंसर, और मेरी टीम को भी
मेरी टीम के पैसे कटने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया मुझे, लेकिन एनीवे वो दे देगी। तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पर हैं। अपनी दोबारा सब लोगों को एक दफा रिन्यू करा दें, वी आर विद अपनी दुकान.com. अपनी दुकान.com is doing phenomenal work right now. They're delivering the freshness at your home from your couch while watching our show. You can actually order the grocery. Actually, this is phenomenal. Right now, you're watching us. You can actually order your grocery online by just going on the website apnidukaan.com.au. And आपको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए यूनिक कस्टमर्स को, नए कस्टमर्स को $10 ऑफ दे रहे हैं। उसको लेने के लिए आपने सिर्फ टीम के पास जाके लिखना है हाय इंटरेस्टेड या वाउचर, and that is it. You will get the voucher. You buy this grocery, open the box and tell us how do you feel. If you feel nice, take a photo and snap it and share the love. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं और फिर शो का वक्त खत्म हो जाएगा। तो लेट मी क्विकली गो टुवर्ड्स रजा। रजा 5500 लॉजिस्टिक कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक मिशन था कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा रीजनल एरिया में और टाउन्स के अंदर, रिमोट टाउन्स के अंदर ग्रोसरी, क्या मतलब ग्रोसरी पहुंचाना है। तो एक बहुत बड़ी बात सोच ली मैंने, मतलब ग्रोसरी स्टोर के लिए ड्राइव करना होता है, क्योंकि हम लोग जब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जाते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं, तो हमें एक अरसा लगा के जाना पड़ता है, एक टाइम लगा के ड्राइव करके कुछ भी ले लो यार, बस अभी रास्ते में बाहर है। आप लोग ये डिलीवरी सिस्टम एंड टू एंड बनाया है रीजनल एरिया में। रिस्पॉन्स आपको रीजनल से कैसा मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे था। कैसा रिस्पॉन्स मिला? कुछ फीडबैक्स, कोई कस्टमर स्टोरी कुछ शेयर करें, हमें बताएं कि कैसा रिस्पॉन्स मिला कस्टमर्स का। इतनी मोटिवेशन है हसन भाई to keep us going. Every single day I receive calls, I receive messages, I receive reviews on Facebook, people saying how hard it was to get halal meat, and because of Apni Dukaan, you know, they can actually now get halal meat delivered to their doorstep. So, and that's what drives us, you know, if we don't get that response from regional and remote areas, we have no reason to be in the market, you know what I mean? We have no reason, there is no motivation behind it, right? But those people who appreciate what we have done, you know, living in regional and remote areas, that keeps me going every single day. You know what I mean? I feel so good about it. लोग पूछ रहे हैं मोबाइल एप्स कब आ रही हैं आपकी, मोबाइल ऐप के ऊपर ऑर्डरिंग कब आ रही है? मोबाइल ऐप क्वींसलैंड की ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, विक्टोरिया की विद इन अ डे एंड 2 लॉन्च हो जाएगी, न्यू साउथ वेल्स की विद इन अ वीक लॉन्च हो जाएगी। अच्छा, so you'll be able to find it on जहां पे डिलीवरीज अभी नहीं हो रही है, आपका प्लान है, फ्यूचर प्लान है? हाँ, साउथ ऑस्ट्रेलिया वेरी सून, विद इन अ कपल ऑफ वीक्स इंशाल्लाह साउथ ऑस्ट्रेलिया भी होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वी डोंट वांट टू, as you were saying before, you don't want to grow too fast too quickly, right? Exactly. You otherwise you have to look at your revenues, you have to look at your, you know, what you do and stuff like that. So you know, we want to do it step by step. So inshallah South Australia is next. We'll do South Australia once the dust is settled in, you know, we are getting used to the system. It's all automated. Remember, the key is automation. Once it's automated, doesn't matter, you can go to the next step. You know, once that's automated, then you can go to the next step. So that's what we're doing. So at the moment, we were working with Victoria and New South Wales, getting systems streamlined, taking all the teething issues out. If there were any concerns from the customers, addressing that, making sure everything's smooth. Once that's smooth, then we go to South Australia. Once South Australia is smooth within 2 months or 3 months, then we'll go to WA. Then once that's done, then we'll go to NT. Our mission is to do it all over Australia. All the regional and remote areas should be covered. Metro, obviously, you know, every street has a, you know, halal butcher or international groceries. Even let's say Victoria, I'll talk about Victoria. Even in Victoria, how's the response? That's what I want to know. Very good, alhamdulillah, because and I'll tell you, the range of Pakistani groceries that we have in Victoria, even the stores locally don't have that big of a range. You know, so if you go to places, if you go to a normal, you know, Indian grocery store, you won't be able to find that range that what we carry. So a lot of people have reasons, not only because they're living far, or even if they're living in metro, there are products on our website which they can't find in their local grocery store. That's pretty awesome. अच्छा, तस्मानिया में आपका प्लान है करने? हाँ, इंशाल्लाह, very soon, very soon. अच्छा, कोई लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड्स कार्ड लॉन्च कर रहे हैं सून आप? वो भी है line में भी आ रहा है। Okay, see guys, people are that's a question here right now. We have that's almost ready to go as well. So there's plenty. Not only that, and I'll tell you a few future plans.
So Okay, good. we're about to launch सॉरी inshallah in आपको वहीं पे रोक दूं एक सेकंड के लिए सॉरी yeah. इरम ज़हरा आपने ऑर्डर नहीं करा आई रियली वांट यू टू ऑर्डर and tell us your reviews. You're a very good blogger as well. I would love to have you write a quick small review, honest review, good bad feedback, everything. इरम ज़हरा को मेरी टीम पीछे से जरा अपने एक वाउचर दे दें $10 का. आज आपको एक स्प्रेडशीट आनी है रात के अंदर. और तो सॉरी मैं एक दफा दोबारा सबको बोल दूं बहुत बहुत माजरत के साथ ज़ोहेब बिन सभी आसिफ वहाब सादिया सैयदा अब्दुल हन्नान कुरैशी ये सारे लोग जो शो देख रहे थे मैंने दूसरी वाली चैट की विंडो देखी नहीं और वहां बहुत सारी 51 से प्लस कमेंट्स ऑलरेडी आ चुके थे लोग आंसर दे रहे हैं मारिया सलाम साहिबा सर्विस वेरी नाइस सर्विस इन रीजनल एरिया इन्होंने आपकी शायद यूज करी है सर्विस तो मरियम सलाम साहिबा बोल रही हैं थैंक यू सो मच मरियम साहब एवरीवन अपनी दुकान के करता धरता फाउंडर यहाँ पर है हम उनसे भी आपको थैंक यू करवा देते हैं कि आपने उनकी सर्विस यूज करी और आपको उससे फायदा हुआ so much. I know half of the names you mentioned. They're all my customers, alhamdulillah. Okay, good. So Tariq Mahmood Saab, thank you so much. Of course, Jibran Babar, Abdul Hanan, Qureshi, Ahmad Khan, everyone who's watching right now, writing all these comments. I wanted to ask him question. Anyway, we'll take your questions. Don't worry. But I'm gonna quickly ask him. Tell us a bit of spice. What's coming soon? अपनी दुकान और so inshallah we obviously as we justify things as things go streamlined we are adding new things to it right so alhamdulillah Victoria is quite streamlined we're getting phenomenal response we're doing 3 times a week delivery 4 times a week delivery depend on the volume and stuff like that so we are going to be adding very soon within a week 2 weeks we'll be adding fruit and vegetables on the website we'll be adding fresh sweets so you know your gulab jamun and ras malai and stuff like that we will be adding inshallah in the next couple of months our plan is to add all the catering services so for example if you're living in a regional remote areas you don't have Pakistani restaurants there right so where do you go to eat biryani and nihari and halim so we want to be able to do a family plan and put that out there as a weekly plan so you can buy your weekly meals and that will be delivered to your home every single week right so you can enjoy the and then obviously we'll do it step by step we'll do it in one state then we'll replicate it in the next state then we'll replicate it to the third state but inshallah end solution will be all of Australia should be able to get every single thing what we have to offer but you know so we will have like a one-stop shop you know you'll have all your groceries meat fruit and vegetables you know sweets your pre-cooked food you know your cooked food you know your halim and nihari and kofta and every single thing so inshallah that's the plan we'll get there slowly phenomenal अच्छा आसिफ रजा साहब सॉरी काजिम रजा साहब आसिफ रजा साहब तो आपको इंडिया से देख रहे हैं माशाल्लाह आसिफ रजा साहब और अपनी दुकान.com पे चले गए आसिफ रजा साहब सॉरी बट ये अपनी दुकान.com.au है ऑस्ट्रेलिया के लिए और इट इज फिनोमिनल लाइक विद डबल ए ऑफ कोर्स एंड उम्मे रेयान काजिम रजा साहब आपके लिए वाउचर सर हाजिर है सर वाउचर दे टीम मेरी पीछे से काजिम बस एक CSV की फाइल एंड में जरूर भेज दीजिएगा इनको ताकि इनको पता हो कि कहाँ क्या गया है काजिम रजा साहब आपको सलाम कह रहे हैं सेइंग ग्रेट टू सी यू ओके नाउ बहुत सारे आंसर्स आए हैं अब ये थोड़ा ट्रिकी है आई डोंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम वी हैव ओनली गॉट 12 more or 13 more minutes to go आई वांट टू आस्क यू अच्छा बहुत मैं रिव्यू कर लेता हूँ क्योंकि लोगों को मैंने बोला है $20 का वाउचर देने के लिए तो वो लोग बड़े आंसर दे रहे हैं सबसे पहले सैयदा साहिबा जितनी भी जिन्होंने मैसेज किया थैंक यू सो मच सादिया साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज करने का और बताने का आसिफ भाब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा लोगों ने दे दिया है आंसर गूगल वाला और जानबूझ के क्वेश्चन रखा गया था आज क्योंकि गूगल के ऊपर आता है कि वी हैव एक्टिव ये वर्ड याद रखिएगा जिनको पॉपुलेशन में काउंट करती है ऑस्ट्रेलिया 3800 सबब्स इन ऑस्ट्रेलिया बट ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में सबब्स ज्यादा हैं लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से है तो हर मेरे भाइयों और मेरी बहनों ने 3800 ही आंसर दिया है मेजॉरिटी ने कि 3800 जो सबब्स हैं तो एक काम करते हैं it's almost and I've done my research so I'll explain so there's almost 7,000 suburbs in just 3 states that we are covering so you know and we're covering 5,500 of them and the rest of the 1,500 is actually quite remote and there is no people really you know there's suburbs there but there is no population really so you know there is I would think I haven't seen what South Australia and
WA is like. I'm not talking about postcodes. Remember, one postcode can have multiple suburbs. Of course. Right. So I'm talking about suburbs, right? So there's, I would think there would be easily 8,000 to 9,000 suburbs all of Australia, easily. ओके अच्छा, काजिम रजा साहब पाकिस्तान से हैं, तो वो आपको दोबारा सलाम कह रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि बताएं उनको कि मैं आप उनको देख रहा हूं लाइव। तो काजिम रजा का थैंक यू मैसेज काजिम पहुंचा भाई, दिया गया है। अच्छा, मैं बहुत अच्छी तरह पहचान गया हूं आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा, आसिफ अहमद साहब जो देख रहे हैं, मैं आपको क्या, व्हाट्स द मिनिमम ऑर्डर फॉर अ फ्री डिलीवरी? ओ नाउ दिस इज अ ट्रिकी वन। अच्छा आसिफ अहमद साहब, अगर मैं रजा की जगह पे हूं तो मैं रजा को रिक्वेस्ट बल्कि कर दूंगा, जिस दिन भी होबर्ट के अंदर पहली डिलीवरी स्टार्ट हो गई, है ना, ऐसे ही रजा, कितने अरसे में आप बोल रहे हैं होबार्ट के अंदर टस्मानिया में स्टार्ट होने Very वाली है? soon, I would say within a month or so. विदिन अ मंथ। तो आसिफ अहमद साहब ऐसी डील करते हैं आज के आसिफ भाई, द पहला कस्टमर हम चाहते हैं आप हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपने अपनी दुकान.com.au के पेज को लाइक करना है, और लाइक करने के बाद आपने वहां पे जाके मैसेज छोड़ना है, आसिफ रजा फ्रॉम तहज़ी होबार्ट। देखिए, दिस इज हाउ PWA केयर्स अबाउट यू। उनको कॉल करके मैंने ऑर्डर लेना है, उनको बोले मैसेज करके मुझे अपना फोन नंबर दे। नंबर दें अपना आप आसिफ भाई, ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। हम फोन पे करके ऑर्डर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं आप ऑनलाइन करें ताकि आपको पता चले कितना आसान है ये। बिल्कुल। तो उसके लिए पहला कुछ भी आपको गिफ्ट वगैरह जो है वो सब रजा भाई की तरफ से है, लेकिन आप पहले कस्टमर होंगे तस्मानिया के। इट्स अ लाइफ अर्निंग मोमेंट होगा, क्योंकि इट्स गोना बी, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, इंशाल्लाह आपकी दुकान इज गोना गो out of the reach. It's gonna blow. It's gonna go next level, inshallah. So you will be like one of the first people to order in Hobart. So it's gonna be phenomenal to see you receive the order, and phenomenal to see how PWOA reaches, beyond boundaries. Pakistan, Bangladesh se bhi ek message aaya. And thank you so much for watching. I can't believe that this has been shared in Bangladesh as well. Mariam, there's no minimum order लिमिट, बट फ्री डिलीवरी के लिए कोई लिमिट है? ये आंसर करते हैं, बहुत देर से आ रहा है क्वेश्चन। $200 से ऊपर फ्री डिलीवरी है। $200 से अंदर हाँ $15 डिलीवरी है। उसके नीचे जो नॉर्मल है, कोल्स वुल्वर्स भी $15 चार्ज करता है। बट इमेजिन people who are living 18 hours away, they're getting free delivery as well over 200, right? No, they're getting good, $15 delivery that are living in 18 hours away, 20 hours away. Imagine. that's phenomenal. अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि देखिए, अगर किसी कस्टमर को मेलबर्न में डिलीवरी मिल जाती है, असल में मेलबर्न की बहुत ज्यादा आवाम है, वो सवाल कर रही है कि एक्सपायर प्रोडक्ट अगर कोई गलती से भी आ जाती है, क्योंकि आप अपने गैराज में तो सब कुछ स्टॉक नहीं कर रहे होगे, तो उसकी चेंज एक्सचेंज, I'm pretty sure you have a policy, refund or exchange, no issues. And no exchange तो नहीं होता, हम लोग पिकअप नहीं, क्योंकि हम थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी यूज करते हैं, तो हम पिक नहीं करते। You can obviously throw it in the bin if you like, but we will send you a replacement or we will refund you full amount, no issues. So anytime. All the people just got connected. So many people just got connected. I'm so thankful. We've got still 5, 7, 10, 15 minutes. We'll try to squeeze in and take some answers. Just gonna quickly repeat. We've got Raza from apnidukan.com.au. We're giving away $10 vouchers to everyone who's watching right now. What you need to do is just in the comment write down apnidukan.com.au. That's all you have to write down, and my team will give you a $10 voucher to order your next grocery. apnidukan.com covers a wide range of variety of products. Don't go anywhere. After this quick commercial, we're giving you $10 vouchers. Gee, thank you so much for staying connected with us for 1 hour. A lot of people have just joined. Just want to quickly repeat again. Sadaqat Ali, thank you so much for commenting. Sadaqat Ali, मेरी टीम प्लीज उनको दे दे, देख रही मेरी टीम कमेंट। अब जैसे मैंने बोला, इतने सारे कमेंट आ गए
किरण अली साहिबा, थैंक यू सो मच. सबने अपनी दुकान.com लिख दिया. दैट्स प्रीटी गुड. जस्ट आपने कुछ नहीं करना है. अपनी दुकान.com के फाउंडर, करता धरता और को फाउंडर, इनके पीछे जो है इनकी मिसेस एक डॉक्टर है. बहुत इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग स्टोरी है. ये वीडियो अगर आप लोग बाद में देखें तो इस वीडियो को देख के इंस्पायरेशन लें. और अगर क्वेश्चंस करना है तो रजा हसन को आप कांटेक्ट कर सकते हैं. अपनी दुकान.com.au के फेसबुक पेज पे जाइए और क्लिक करें, वहां पर लाइक करें उस पेज को. और अभी तकरीबन 3 ऑस्ट्रेलिया के 3 स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं. मोर देन 5,500 सबर्ब्स के अंदर इंटरनेशनल ग्रोसरीज एंड हलाल फूड इज डिलीवर्ड. But the best part, the part I absolutely phenomenally love is remote areas के अंदर जो रहते हैं, regional areas में रहते हैं, किसी भी जगह पे रहते हैं आप regional areas में, go and check your थोड़े बहुत regional towns के नाम ले लूं लोगों के लिए easy करने के लिए. Go for it. So let's say Victoria. Think about Victoria. So we deliver to Ballarat, Shepparton, Bendigo, Geelong, Horsham, Albury, Wodonga, Mildura, and in between, the whole lot. If you come to New South Wales, we deliver to Dubbo, we deliver to Canberra, we deliver to Port Macquarie, Coffs Harbour, Newcastle, Tamworth, West Tamworth, these all places, Byron Bay, these all places are quite regional. So if you come to Queensland, we deliver to, Toowoomba, we deliver to not Byron Bay, sorry, Hervey Bay, you've got Bundaberg, you've got Marlborough, you've got Rockhampton, Townsville, Mackay, Cairns, Tully, Innisfail. So these are all regional areas I'm talking about. So obviously we cover all of Melbourne as well, all of Sydney, all of Brisbane, so metro. But on top of that, these are the regional areas that we cover. So if you have any questions, we have online, you can go in there, type your postcode in. It will come up. If your postcode is not coming up, send us a message. We will try our best to get there. You know what I mean? If we're currently not delivering to a place, we find ways to get there. We actually changed one of, Horsham. We had a Muslim brother. He was only 3 families. They're living there. Initially, we were not delivering to Horsham. But when they approached us at the Qurbani time, they said, really, we want to do Qurbani and we want to be able to get meat and stuff like that. Please help us out. To be honest, I changed my courier company just to get it delivered to them. So, we realized that, there is no other courier company that goes to that area. Let's change the courier company. So we changed our refrigerator. This is not a business for him, really. It's all about how we can serve as much as possible to the community. So we've got, again, I just want to reintroduce one more time. We've got Raza from apnidukaan.com, one of the senior business manager who jumped into the IT industry and actually changed the way people are ordering and changed the way people are getting deliveries and groceries at their home. International groceries, Pakistani groceries, Indian, a little bit of living 10 hours away from metro, from home. 10 hours away, hundreds of kilometers away from Melbourne Metro. I would say more than 500 kilometers away, you're getting the grocery delivered at your home by apnidukaan.com.au. Not only that, I want to say there's a lot of inspiration from this particular person. अच्छा, बस 5-6 मिनट लास्ट रह गए. जिन लोगों ने लिखा है apnidukaan.com.au, you are definitely getting the voucher. Don't panic. People are panicking before you finish. Can I have a voucher? So मेरी टीम बहुत सारे लोगों को देख रही है इस टाइम पे, बहुत सारे लोगों को वाउचर दे रही है, तो प्लीज उसके साथ स्टिक रहे. अगर अभी भी आपको अपनी दुकान.com.au का $10 का वाउचर चाहिए ऑफ, just write down apnidukaan.com.au on the comments and you will get one. Okay, now let's go towards the last bit of it. Now you told us you've got multiple plans. अच्छा, आपने अपनी चीजें बताई कि हाँ आप ये चीजें ऐड करने वाले हैं. मुझे सिर्फ ये बताएं कि are you planning this to make like a grocery store as in store as well, or it is just going to be a totally online presence? Look, any thought about it? Inshallah, eventually we will have to do it, not because we want to do it right now. Everything is going online, but I think to be able to control it a lot better, to be able to scale it a lot better logistically as well and stuff like that, we will have to have a physical store where people can actually walk in and buy as well. So that is on the list. I can't give you a timeline. It could be 6 months, it could be 12 months, it could be 2 years, but eventually we want to be able to have a physical store in each and every city. So Melbourne, Brisbane, Sydney, Adelaide, Perth, but that's to come. अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त आया है.
अच्छा, एक अली भाई ने, अली नवीद भाई भी जो है ना काफी बड़ी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बिजनेस पर्सनालिटी है बाय द वे। रजा भाई, कभी आपकी मुलाकात हो तो नेटवर्क के हिसाब से बड़ा अच्छा होगा। he manages a couple of restaurants, plus he's also the owner of the mechanics auto care. अच्छा, इन्होंने आपका पहला ऑर्डर कर दिया I've इन्होंने? met. I think I've met him. Okay, Ali Bhai. Is then he auto care from memory? It's been a long time, but I think he's in the north कैम्बर फील्ड में somewhere. है, हाँ, Camberfield. Bilkul. 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 that's for it. That's Bilkul. where he Bilkul. is. Back in the day, I've had dealings with him. Yes. Yeah, so he's very famous in the community here. Though of course it's very phenomenal to see people like that are endorsing. Now, what you need to do to, अच्छा रजा भाई, आपसे एक क्वेश्चन आया है। एक भाई साहब है, वो बोलते हैं कि I wanna cut this rat race of 9 to 5. I wanna jump into the business. Do you need to really quit your job and become an entrepreneur, or you can be an entrepreneur while doing the job? अच्छा, मेरे पास आंसर है, लेकिन रजा भाई, you are the inspiring story today. You answer it. 100%. And you have an example in front of you. I am working full time. My wife is working full time. We've got 2 young kids, and we're still doing this, alhamdulillah. If you have a passion about something, if you have an idea, if you have a pain, if you have a drive, if you want to achieve something, then there is no restrictions. There is no you there find is that no 1 excuses. hour before sleep and after sleep, and that makes Yep. 2 hours a day. Yeah, and 100%. And you think about, if you have a passion, you find time for it. If you have love for your family, you find time for them, right? If you have a passion for your business, if you have a passion for your work, then you find time for it. There's no excuses, and you can do it with your work. No issues. That's one more interesting question. Now, I always look, Raza, we've got a lot of questions, and I'll be very honest, I'm not taking all of it. But it's a very nice question, and it's a very nice ask from हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी auntie, जो भी हैं, of course. Lekin she asked a very good question that in regional areas they don't have desi dukans, and hence they don't have mehendi. I think mehendi is like जो ईद पे लगाए थे. Challenge, apnidukaan.com offers mehendi or not? In a few stores we do. In a few stores we do. Yes. And inshallah, I'll look into it and make sure store, what do you mean? Like, so we have separate store for each state, Yes, right? So even though the website is the same, when you visit apnidukaan.com.au, there's a Victoria, a pop-up comes up. You have to select your state. So each of those states are actually separate store. So they have separate products. They have different products. They have different variety. We had to do that obviously to manage it well. Because each warehouse, each store doesn't have all the inventory. So to be able to maintain that, we have to have, separate stores. So, some of the stores, I know Victoria does have many, other states we're working on, and we will make sure. So once I get off this, if there's a family who's living in Horsham and they wanted to have mehendi for their they next can get it. They can get it. That's awesome. They can order it online from the couch and they can get a mehendi. That's phenomenal. That's pretty good. And मैंने देखा आपके पास हिमानी की भी बहुत सारी रेंज है, जो कि एक प्योर बड़ा जबरदस्त ब्रांड है. और मैंने देखा उनके चावल और बहुत सारी ब्रांड है. अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मतलब it's not I mean, it's up to you to answer it. It's not a business like idea I'm copying, but I'm saying, क्या आप किसी particular क्या ये सारा स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट सप्लायर से पिक होता है लॉजिस्टिक वाइज and then get delivered, or you have someone who's looking after Victoria completely, someone who's looking after Western Australia? Like, how do you control it? I'll explain. So when stock leaves Pakistan, India, and Bangladesh, and it comes to Australia, it doesn't come through one supplier, right? It comes from different suppliers. So one supplier may have Shan, one supplier may have National, one supplier may have United King, one supplier may have 𝚅𝚑𝚠𝚑. So you can't go to one supplier and buy all this stuff and sell it, right? So to make it easier, we have separate places in each state. So we have a place in Melbourne, Sydney, and Brisbane who carry all these things from different suppliers, and we ship out. We have workers sitting there, who's doing packaging, pick and pack, putting labels on and stuff like that, and dispatch from each cities to each state.
right? So within, say, Queensland gets covered, all of Queensland gets covered from Brisbane. So we have all the inventory in Brisbane. So whatever the inventory is, what you see online, right? And more to come. Like we have access to more than 10,000 products, but they're not all of them are available online. Available, you know, we might have 2,500, but inshallah, slowly we keep adding more stuff to it. Perfect. Thank Obviously, you so a much. bigger challenge in COVID-19 is stock. You know, a lot of containers are not coming from Pakistan or India, or you know, there are delays. You know, like United Kingdom's been delayed for 3 months. You know what I mean? So there's delays on a lot of stock. Perfect. Now, okay. So to end, I actually reading the question. Very phenomenal question. Very मजे मजे की चीजें लोग पूछ रहे हैं. कोई पूछ रहा है रसगुल्ले हैं, तो रसगुल्ले का उन्होंने बोल दिया है कि आप फ्रेश आने वाले हैं आपके पास. It's pretty phenomenal to see a person like, of course, a person like Raza in his 9 to 5. He's looking after his 9 to 5 work. He's looking after his sales targets or his targets. Sorry, not sales. I mean, whatever the targets he has. He's looking after it all. And after all that, he's managing an online shop which is putting a new marks all over the world. So, sorry, all over Australia. So it's pretty phenomenal and good to see that you're going to be dominating the market pretty much other states as well. So now हमारे प्रोग्राम का वक्त of course खत्म होता है. मैं उन सारे लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहे और कनेक्टेड रहने के साथ साथ उन्होंने हमारे सारे शो को देखा, अपनी दुकान के बार कमेंट्स किए और अपनी दुकान के बारे में पूछा. तो एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी जो हमने आज आपके शेयर करी, इस तरह हम आपके साथ करते रहेंगे. यहाँ हम लेते हैं रजा से इजाजत. रजा चले जाएंगे बैक स्टेज पे और हम आपके साथ अपने शो को इख्तिताम करेंगे. तो हसन भाई जाने से पहले मैं I must say you guys are doing a phenomenal job, to be honest. PWA ने आते साथ ही जो है ना बस धमाका मचा दिया है. The shows that you're giving, I think I saw 12 different type of shows that you're digitally doing and you're hitting all the right spots. You're talking about politics, you're talking about studies, you're talking about businesses, you're covering everything. You're doing, alhamdulillah, you're doing fantastic in this pandemic. You're doing a fantastic job. Thank you so much. And this is of course a combination of efforts. But by the way, thank you so much, Raza, for staying connected. And all those people who wanted to connect with Raza, they can connect, hit him up on Facebook page. Thank you so much, Raza, for staying with us. And thank you so much, the little boy over there. Thank you. Thank you so much. Take care. Assalamu alaikum. Assalam. Okay, so that was Raza with us. Thank you so much for staying connected for all this time you have been, and thank you so much for all our supporters. apnidukaan.com.au, of course. Then we have Digital Empire Group, which are master in digital media and social branding. We have The Mechanics Auto Care, Lala Food Joint, one of the best and the yummiest burgers I have even eaten in northern suburbs. And then we have Great Getaway Travel, one of the best service provided for all your travel needs. So thank you so much that you have been stayed with us for that long. I would like to say thank you. We'll meet you again. ये Real Grooves जो है आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं once in a month. आपके शो के फीडबैक हमें देते रहें और ये शो के जो आप फीडबैक हमें देते रहेंगे वो हम उसको अप्लाई करते जाएंगे. So thank you so much for staying connected with us. Of course, it was phenomenal to see you guys. And next time we'll see you in about 1 month time. Stay blessed. Stay happy.